So we were studying Kepler's laws of motion. हमने कल केपलर का पहला लॉ देखा and it basically tells you, it is also called as law of orbit, and it basically tells you all the planet moves in elliptical orbit around the sun with sun at one of the foci of the ellipse, right? So today we will see in detail again what is what is Kepler's second law, which was also called as law of areas, and then we will note down. So let's start with second law. So Kepler's second law, law of areas. Okay, so we already saw what is this. We'll just repeat it, and it's pretty simple thing. बहुत ही simple है. So the thing is, as you already know now, कि किसी भी planet का orbit around sun is an ellipse. So any planet traces elliptical path around sun. Sun being at one of the foci, sun is sitting here at S. The line joining the planet, let's say initially planet was here. So the line joining planet and the sun sweeps equal areas in equal interval of time. मतलब अगर planet P से SP पोजीशन से न्यू पोजीशन पे जाएगा, let's say it goes somewhere here in a given interval of time. So the line joining the sun and the planet sweeps this area. So this is the area that is swept by, this much area is swept मतलब cover basically. So this much area is swept by the line joining sun and the planet. Okay, good. So we have to prove that this area, one in the red, is equal to, let's take planet being here, और उसी same equal interval of time में the planet moves to a new position. I can name the position. So planet will cover this area. So we need to prove these two areas are equal, right? Easy है. So you have to start by giving some brief idea कि ऐसा क्यों होता है that length of arc at point P, जब planet P point पे था तो length of arc in a given time interval is smaller, और जब planet let us say P dash पे था, in that case length of arc in the same time interval is more, है ना? तो length of arc are different even though time intervals are same. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है because the motion of planet around the sun, first of all, is not circular. Second, the motion of planet around the sun is not a uniform motion. Uniform matlab the speed is not same at every point in its trajectory, right? We have given, let's give name r bar to this vector. ये जो वेक्टर है जो सन से स्टार्ट होके प्लैनेट तक जाएगा उसको आर बार बोल देते हैं. ओके, तो जब प्लैनेट सन से दूर होगा इट विल स्लो डाउन, जब प्लैनेट सन के पास में होगा इट विल मूव फास्टर, राइट? तो द एरिया कवर्ड हियर, if v is velocity of particle
at this point. So let's say, and you already know when in circular or angular motion, velocity is always tangent. So this is v bar here, tangent at every point. ओके तो ये जो एरिया है, द एरिया swept will be given by, let's say, delta a bar. Because why delta a bar? Because we are taking small interval of time. So delta a bar is equal to half r bar cross v bar delta t. ये कहां से आया? r बार ये एक वेक्टर है, v बार और एक वेक्टर है, मल्टीप्लाइड बाय dt करूंगा तो आई विल गेट डिस्टेंस, है ना? तो ये r बार है। बिकॉज इफ आई ट्रीट दिस स्मॉल टाइम इंटरवल, तो मैं यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। ओके सो एरिया covered is actually area of triangle. Similarly here also, if I consider small enough time interval, I can take that as a straight line, right? So then ये v बार कहां से आया? मीटर पर सेकेंड इंटू डेल्टा टी, सेकेंड मतलब मीटर, ये डिस्टेंस है। आपको ऑलरेडी पता है इफ टू साइड्स आर adjacent sides of a parallelogram, क्योंकि ये v बार डेल्टा टी और ये r बार, आई हैव जस्ट मूव्ड, मैंने सिर्फ v बार को यहाँ, v बार डेल्टा टी को यहाँ मूव किया है, दैट्स इट। So these two vectors become two adjacent sides of parallelogram, और हमको ऑलरेडी पता है फ्रॉम क्रॉस प्रोडक्ट एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज r बार क्रॉस v बार डेल्टा t। हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, इसलिए मैं हाफ में स्प्लिट कर रहा हूं क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था इस एरिया में। तो r बार क्रॉस v बार डेल्टा t बाई 2 गिव्स यू एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल, मतलब एरिया स्वेप्ट बाय द position vector of planet or the line joining star and planet, right? So you know how this equation you get. So अब हम क्या करेंगे? by property of cross product, कोई भी स्केलर हो और क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर होते हैं, दोनों वेक्टर में किसी के साथ भी स्केलर हो, तो डेल्टा, वो स्केलर हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो डेल्टा टी हाफ r बार क्रॉस v बार आ गया, तो ये आ गया आपका डेल्टा ए बार बाय डेल्टा टी, दैट इज हाफ r बार क्रॉस v बार, राइट? अब what we know is p bar is mv bar, so v bar turns out to be p bar by m, and if you substitute that over here you get half r bar क्रॉस p bar by m, और स्केलर है बाहर लिख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया। तो आपको मिल गया डेल्टा ए बार बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 m r बार क्रॉस p, तो ये आ गया आपका l बार बाय 2 m। तो डेल्टा ए बार बाय डेल्टा टी इज नथिंग बट l बार बाय 2 m, राइट? ये मिल गया हमको एरिया पर यूनिट टाइम। तो इफ एल बार इज कांस्टेंट, अगर एल बार कांस्टेंट हुआ मतलब एल बार कंजर्व्ड है, मतलब ये आ गया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अगर एल बार की वैल्यू कांस्टेंट है तो आपको मिल जाएगा डेल्टा ए बार बाय डेल्टा टी आल्सो कांस्टेंट। इसका मतलब ये होता है कि द एरिया कवर्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट covers equal areas in equal interval of time, right? मैं वापस बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत सिंपल है। I will go through everything again. This is simple and I want you to write this on your own without going into, without revising a lot. So easy है, so you need to understand things.
बात सिर्फ इतनी है, सन से प्लैनेट तक लाइन ज्वाइन कर दो, वो लाइन मतलब जैसे प्लैनेट आगे बढ़ेगा वो लाइन क्या करेगा, वो लाइन एक एंगल कवर करेगा, एंगल कवर करेगा का मतलब क्या होता है, वो लाइन एक एरिया स्वीप करेगा। वो जो एरिया स्वीप कर रहा है द लाइन joining star and the planet, that area swept by that particular vector is equal in equal interval of time। तो doesn't matter कि planet का position क्या है, but equal time में हमेशा ही equal area cover करेगा। मतलब planet perihelion पे हो, planet aphelion पे हो, equal time में हमेशा equal area cover करेगा, राइट। ये हमको प्रूव करना है एंड इट कम्स फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है, जब भी फोर्स सेंट्रल हो। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स सेंटर। तो यहाँ पे फोर्स किस तरफ है, टुवर्ड्स सन। फॉर एग्जांपल यू सिटिंग ऑन दिस प्लैनेट, this force is also central force because gravitational force exerted by earth on you is towards center, correct। तो सेंट्रल फोर्स जब होगा तो लीनियर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड क्वांटिटी होता है, ये बताना चाहिए। सो इट कम्स फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हुआ ओनली इन दैट केस एरिया कवर्ड बाय अ प्लैनेट इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। तो हमको प्रूव करना पड़ेगा कि एल बार कांस्टेंट है, लेकिन एल बार और डेल्टा ए एरिया कवर्ड इसका रिलेशन भी बनाना पड़ेगा। तो हम व्हाट वी नो बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स, ये एक वेक्टर हो गया आपका आर बार, ये दूसरा वेक्टर हो गया वी बार डेल्टा टी, बिकॉज दैट इज अ वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। कैसे, वी बार इज मीटर पर सेकेंड, डेल्टा टी सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, तो वी बार डेल्टा टी विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। तो ये है वी बार डेल्टा टी, ये है आर बार। And you already know that we have luxury to move a vector wherever we want। हम जहां चाहे वहां वेक्टर को मूव कर सकते हैं। तो मैं इस वेक्टर को विदाउट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए मैंने मूव कर दिया। नाउ दिस बिकम्स, these two vectors are adjacent sides of a parallelogram, right। And you already know area of this parallelogram is given by r bar cross v bar delta t। और हमारा इंटरेस्ट एरिया पैरेललोग्राम में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट हाफ पैरेललोग्राम में है, क्योंकि दिस इज द एरिया दैट वी आर लुकिंग फॉर, राइट। तो मैं जब इसको डिवाइड बाय 2 करता हूं तो आई गेट दिस एरिया डेल्टा ए। सो डेल्टा ए बार इज आर बार क्रॉस वी बार डेल्टा टी। डेल्टा टी जो है स्केलर, और स्केलर को आप बाहर निकाल सकते हो। फिर मैं डेल्टा टी को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ एंड व्हाट वी नो इज वी बार, बिकॉज मोमेंटम पी बार इज एम वी बार, तो वी बार इज मोमेंटम पी बार अपॉन एम। देन डेल्टा ए बार by delta t is equal to 1 upon 2m r bar cross p bar। So delta a bar by delta t is equal to L bar by 2m, where L bar is angular momentum। If L is constant, delta a by delta t is also constant। delta a by delta t constant का मतलब होता है that the area covered is equal in equal intervals of time। Good, simple। So we'll just note down things point by point, बहुत easy है। By the way, none of these laws, तीन लॉ केपलर के, were proved by Kepler himself, क्योंकि वो purely observational laws थे। So none of them was actually proved by Kepler।
ये तो हमने अभी मैथमेटिकली किया है, but it was not done by Kepler at that time because this was like 1609. 400 से भी ज्यादा साल हो गया इसको प्रूफ, इसको ऑब्जर्वेशन लिए इसके. So let us first write down the statement that is important. Statement क्या है? The line that joins a planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time. Right, बस simple है ये. Then what is important? Important thing is that the speed of the planet does not remain constant, it varies with the position. So Kepler observed that planets do not move around the sun with uniform speed. They move faster when they are nearer, मतलब near मतलब पेरिहेलियन के पास जब होंगे, to the sun, while they move slower when they are farther away. When they are farther from the sun. Right. So how can we explain this law? Is simple. So figure shows the orbit of planet, the orbit of a planet around the sun. The shaded areas are the areas swept by line SP, that is the line joining the planet and the sun in fixed intervals of time and fixed intervals of time. And according to second law, these areas are equal. So these are equal areas according to the second law. According to the second law. Right. So we'll now prove this mathematically, जैसे हमने already किया है. So suppose the sun is at the origin and sun at the origin. Suppose the sun is at the origin. The position of planet is denoted by r bar and the momentum
perpendicular to R bar is denoted by P bar, right? Okay, let M be the mass of the planet. Okay, so let's do mathematical derivation now. So R bar और P bar जो है, as you can see, P bar और R bar perpendicular है, इसलिए मैंने बोला let M be the mass of the planet. Let delta A be the area swept by R bar, be the area swept by R bar. Therefore, what we have is, therefore what we can write is delta A bar is equal to half R bar cross V bar delta T, right? Which can be written as delta T को बाहर निकाल लिया by 2 R bar cross V. Therefore, what we have is delta A bar by delta T is equal to 1 by 2 R bar cross V bar, right? So you can write this as half R bar cross P bar by M, and since V bar is P bar by M, okay, so therefore what you have is delta A bar by delta T is equal to 1 by 2m R bar cross P bar, which is equal to L bar by 2m, since L bar is equal to angular momentum is R bar cross P bar. Okay, so this is how you can prove it. अब आगे बोल सकते हो, if L is constant, then delta A by delta T is constant. If L bar is constant, then delta A bar by delta T is constant. Therefore, area swept by line joining the sun and the planet covers or sweeps equal areas in equal interval of time, in equal interval of time, right? Hence proved. तो बहुत सिंपल है ये, and this is a consequence of central force because the gravitational force is central force है, इसलिए L conserved होता है, और that's why you get equal areas in equal interval of time. Okay, so let's move to third law now. So Kepler's third law. Yeah, Kepler's third law, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स. ये बहुत ही सिंपल है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है. वी डोंट वांट टू प्रूव एनीथिंग ओवर हियर. We just have to understand.
So what does it tells us is the time period, the square of the time period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to cube of the semi major axis. अगर आपको याद होगा ये हो गया orbit of a planet around the sun being here, right? आपको पता होगा ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी यहाँ से and here, so this is semi major axis, let us denote by r. और प्लैनेट को एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड. सो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड of revolution of a planet around the sun is directly proportional to cube of semi major axis of the ellipse traced by the planet. ये r मतलब रेडियस नहीं है. हमने फर्स्ट लॉ लिखते वक्त सेमी मेजर एक्सिस को a लिखा था तो भी चलेगा. मैडम यू राइट a क्यूब चलेगा, यू राइट r क्यूब चलेगा, एक ही बात है. So t square is proportional to r cube. This is all Kepler's third law tells you, because Kepler's third law gives you information about period, hence it is called as law of periods, right? So let's note it down. इसका कोई derivation नहीं है, it is just in the form of a statement and that's it. So statement easy है, the square of the time period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of the semi major axis of the ellipse traced by the planet. Simple, extremely simple. So we will just write mathematical statement for it and that's it. We don't need to write anything else. We don't have to prove this, right? So mathematically what you can write is, if t is the time period of revolution and r is semi major axis, then t square is proportional to r cube, which means t square is equal to some constant of proportionality multiplied by r cube. मतलब t square by r cube is a constant. इस पे बहुत सारे problems आते हैं in exams like JEE, NEET and CET. So you will have questions on this, right? Since they ask you questions on this, that's why I am going to take a question now. Okay, so we are going to take a question related to what we learned just now. Third law, t square is proportional to r cube. So what would be average duration of year
if the distance between the sun and the earth becomes thrice of the present day, twice of the present day. तो बहुत ही easy question है. It is extremely simple question. तो duration of year, what will the duration of year become? So let's say, let us first solve case number A. हमको ऑलरेडी पता है टाइम पीरियड T1 now is 365 days. Let's say the distance of earth and sun is r, right? If the distance becomes thrice the present distance, so they are telling you that r2 is 3 times of r1, and they're asking you what will be t2. Okay, so this is given and thrice bola hai 3 times of r1, and you're supposed to find out t2. It is very simple. हम already अभी formula हमने mention किया, so we will be using a simple formula here, that is t square is proportional to r cube. So the solution is still simpler because you know that t2 by t1 whole square will be equal to r2 by r1 का cube. Therefore, T2 square will be R2 by R1 cube into T1 square. Simple. This is 2 times of R upon 3 times of R. Thrice बोला है पहले केस में 3 times of R upon R cube T1 square. So you will have T2 is equal to 3 cube और उसका root. 3 cube is 3 into 3 into 3 27, उसका square root. तो T2 is square root of 27, 3 का क्यूब किया उसका स्क्वायर रूट किया into t1. तो अंडर रूट ऑफ 27 is of course 3 root 3, 3 into 1.732 into t1 की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी, तो I'll just put it here. तो t2 is equal to 3 root 3 into t1 is 365. So 3 into 1.7 around 5.1 into 365. So it will be around 1897 days. तो जहां पे एक साल हमारा 365 days का होता है, वो it will become around 1900 days if the distance of earth and the sun is made thrice. Similarly, in case B, you can do the same. In case B is simple. Again, T1 is 365 days and T2 and R1 is R and R2 is 2 times of R, and you are supposed to find out what is T2 here, and the formula remains the same, कुछ भी change नहीं है. So it is quite simple. T square is proportional to R cube, and then you can just quickly find the solution to it. So T2 by T1 square is equal to R2 by R1 cube. So T2 square is 2 times of R upon R cube into T1 square. So T2 will be equal to 2 cube is 8 or T1 square, and this is 4 2s are, so 2 root 2, 4 2s are, right? So T2 will be 2 root 2 times of T1, 2 into 1.4 into 365, so that is 1032 days. ओके, तो अगर अर्थ को डबल डिस्टेंस पे मूव कर दिया हम लोगों ने, इन दैट केस टाइम पीरियड विल बिकम अराउंड 1000 days. ओके, easy. Let's move to next topic now, and that is universal law of gravitation, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं इसको. तो पहले आज हम लोग समझ लेंगे, and maybe if we have time we will write down. What does it tells us? बहुत simple है. So we are going to study what is
यूनिवर्सल, मतलब पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी अप्लाई करो इट विल ऑलवेज बी ट्रू, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि नॉट एवरी फोर्स इज यूनिवर्सल। ओके, इसको आप बोलते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी। यू ऑलरेडी नो दैट, व्हाट डज इट टेल यू, आपको ये फोर्स बताता है, ये लॉ बताता है दैट एवरी particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is proportional to product of masses and inversely proportional to the square of distance between the two masses, right? So gravitational force or force of gravity between two masses is proportional to m1 m2 by r square। ये हमको पता है, लेकिन आया कहां से, है ना? जैसे मैंने बताया के प्लस लॉ ऑब्जर्वेशनल, तो ये कहां से आया? फिर ये ऐसे आता है न्यूटन। न्यूटन व्हाट ही डिड, उसने अर्थ और मून का सिस्टम लिया, एंड एज वी नो द ऑर्बिट ऑफ मून अराउंड अर्थ इज सर्क्यूलर। यस इट इज सर्क्यूलर, इट इज नॉट इलिप्टिकल। वो इलिप्टिकल जो है इट इज ट्रू फॉर प्लैनेट्स, दैट टू अंडर सर्टन कंडीशन। वो सर्टन कंडीशन क्या है? दैट द प्लैनेट शुड नॉट बी वेरी क्लोज टू द स्टार। ये मुझे इसलिए पता है बिकॉज ये पूरा थ्योरी, इस पूरे टॉपिक पे ही मेरा रिसर्च है। सो आई नो इफ द प्लैनेट इज वेरी 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 क्लोज टू अ स्टार देन द ऑर्बिट इज सर्कुलर, अदरवाइज इट इज इलिप्टिकल। कितना क्लोज? इतना क्लोज कि प्लैनेट को उसके स्टार के अराउंड चक्कर लगाने में 2 3 4 दिन 5 दिन 10 दिन लगने चाहिए। हमारे प्लैनेट को 365 डेज लगता है। एनीवेज दैट इज पार्ट ऑफ something other force, tidal interaction, we'll not go into that। but by the way अर्थ मून सिस्टम में हम बोलते भी हैं मून टाइडली लॉक्ड है। अर्थ मून सिस्टम में मून का ऑर्बिट सर्कुलर है, रफली सर्कुलर, हमको पता है। और हमको क्या पता है? सो व्हाट न्यूटन न्यू एंड व्हाट डू वी नो इज एक टाइम पीरियड ऑफ मून अराउंड अर्थ इज 27.3 days and distance of earth and moon, let us say r, is equal to, so distance between earth moon बोल देंगे is equal to, हमको पता है this is around roughly 3.85 into 10 power 5, 3,85,000 kilometers something, 3.85 into 10 power 5 kilometers, this is what we know। और क्योंकि मून अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में है, तो हमने सीखा है इफ एनी ऑब्जेक्ट moves in circular orbit around any other object, then it experiences a centripetal force which is given by mr omega square। and force in general, force का फॉर्मूला क्या होता है? mass into acceleration। and what we know is omega, that is angular frequency, is 2 pi times of linear frequency, and linear frequency n is 1 upon time period t। very good, correct, good। so we know r value दिया है ना 3.85 किलोमीटर्स, 3.85 10 पर 5 किलोमीटर्स टाइम पीरियड दिया है। तो मैं सब ये सारे के सारे वैल्यूज मैं एक इक्वेशन में मैं डाल सकता हूं, तो मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको मिलता है 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने क्या किया? हमको पता है मून जो है अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में है, हमको टी पता है, हमको आर पता है, तो हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना लिया इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ अर्थ मून एंड टाइम पीरियड ऑफ द मून, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको मिल गया
0.0027 meter per second square. But what else do we know? अगर अर्थ के पास में या अर्थ की सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट हो, तो इस ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उसके लिए एक्सेलरेशन होता है acceleration due to gravity, that is g. So for any object on the surface of earth, the value of acceleration is 9.8 meter per second square, right? तो ऐसा कैसा पॉसिबल है? अर्थ और एक ऑब्जेक्ट, अर्थ भी उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, मून पे भी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्सर्ट कर रहा है, राइट? तो दोनों एक्सेलरेशन के वैल्यूज अलग अलग क्यों होने चाहिए? तो न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और एक्सेलरेशन ऑफ मून दोनों को कर दिया डिवाइड। अब डिवाइड करने से क्या हुआ देखो, 9.8 अपॉन 0.0027, इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो ये आता है आपका 3600। सो रेशियो ऑफ acceleration of object on the surface of earth is, or a object is 3600 times of a moon. इतना ज्यादा है acceleration, right? Then Newton thought ऑब्जेक्ट तो अर्थ की सरफेस पे है और मून तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, मतलब ये एक्सेलरेशन की वैल्यूज जो अलग अलग आ रही है, इट मे बी बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। तो व्हाट ही डिड, उसने बोला चलो ऐसा करते हैं, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, मतलब अर्थ मून डिस्टेंस, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ, सो अर्थ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इसका रेशियो लेके देखते हैं क्या होता है। अर्थ मून डिस्टेंस कितना, 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर्स। अर्थ और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना, जितना अर्थ का रेडियस है, क्योंकि हम लोग सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं। अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर, रफली, या फिर प्रिसाइज बोलोगे तो 6378 प्रिसाइज किलोमीटर्स में। तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये आ गया 60। मतलब ये कि ये जो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ मून था, ये था 3600, मतलब 60 का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस ऑफ अर्थ मून अपॉन डिस्टेंस ऑफ अर्थ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ का स्क्वायर। That means we have an important conclusion, and that important conclusion is acceleration is inversely proportional to distance square। देखो, if you see here, acceleration of object और यहाँ पे distance of object inversely proportional है, acceleration of moon and distance of moon ये भी inversely proportional है। So we have an important conclusion here that acceleration fades away with distance, square of distance, मतलब acceleration कम होते जाएगा as square of distance, distance जैसे बढ़ेगा तो वो कम होगा, a is proportional to r square, but force is mass into acceleration, मतलब force is proportional to acceleration और multiplied by mass, तो force is proportional to m by r square। तो any object experiences a force due to earth which is given by mr square, good, right? But Newton's third law आपको याद होना चाहिए of motion, every action has equal and opposite reaction। मतलब अगर अर्थ मून पे फोर्स लगा रहा है तो मून भी अर्थ पे फोर्स लगाएगा which is proportional to, right?
विच मीन्स, और एक चीज है, एक्शन रिएक्शन इक्वल होता है। इसका मतलब इन जनरल फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। ये जनरल कंक्लूजन है। तो यहां से आता है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच टेल्स यू एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर जहां भी मास है अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब जहां दूसरा मास है, विथ अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस and inversely proportional to square of distance between them. So this is how gravitational force was derived. Okay, so what I will do is tomorrow I am going to, in the next session I mean, I'm going to repeat everything again and put it down in the form of notes, right? तो आज हमने क्या देखा? आज हमने पहले सीखा केपलर्स सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया। सिंपल है, जो लाइन स्टार और प्लैनेट को कनेक्ट करती है वो लाइन इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है, फिर हमने वो प्रूव किया है। देन केपलर्स थर्ड लॉ इज सिंपल, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट is proportional to cube of semi-major axis। फिर हमने उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है एंड देन वी सॉ व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन which will again be taken tomorrow in the next session, I mean, along with notes।